अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी मुलाकात डॉक्टर तलत अफजा से मैक्रो इकोनॉमिक्स के 17th लेक्चर में हो रही है। इससे पहले कि हम आज का लेक्चर शुरू करें, मैं चाहूँगी कि पिछले लेक्चर को थोड़ा सा रिव्यू करा लें, क्योंकि पहले हाफ ऑफ दिस लेक्चर यानी कि टुडेज लेक्चर जो है दैट विल बी कंप्लीटिंग अ टॉपिक जो हमने पिछले 1-2 लेक्चर्स में शुरू किया था, और उसके बाद जो है हम अपना एक नया टॉपिक जो है वो शुरू करेंगे इंशाल्लाह। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कशन शुरू की थी ऑन ओपन इकोनॉमीज। ओपन इकोनॉमी में हमने जो है वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट्स एंड द गवर्नमेंट स्पेंडिंग के अलावा नेट एक्सपोर्ट्स को भी शामिल किया था, और उसके साथ हमने ये देखा था कि अब हमारा नेशनल इनकम अकाउंटिंग आइडेंटिटी जो है उसकी क्या फॉर्म होगी। इस सिलसिले में हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए फाइनली जो है ये देखा कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द नेट एक्सपोर्ट्स एंड द इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज, और उसके बाद हमने ये रिलेशनशिप जो है एक्सचेंज रेट के थ्रू भी इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज को देखा, और ये कहा कि देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट्स। एक हमारा नॉमिनल एक्सचेंज रेट होता है और दूसरा होता है रियल एक्सचेंज रेट। We discussed the real exchange rate first and then we move to the nominal exchange rate. So आज हम इन्हीं टॉपिक्स को थोड़ा सा रिव्यू करते हुए जो लास्ट टॉपिक ऑफ द ओपन इकोनॉमी है परचेजिंग पावर पैरिटी उसको डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि आज का लेक्चर शुरू करें, आई वुड लाइक टू रिव्यू द प्रीवियस सर्टेन टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमने डिस्कस किए थे पिछले लेक्चर में। तो पिछले लेक्चर में पहले हमने बात की कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रेड डेफिसिट सरप्लस और द बैलेंस ट्रेड विद द इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज, और फिर उसके इस सिलसिले में हमने ये देखना चाहा कि हमारी सर्टेन पॉलिसी मेजर्स जो हैं वो किस तरह इन्फ्लुएंस करेंगी हमारे ट्रेड बैलेंस को एंड अल्टीमेटली द एक्सचेंज रेट्स। तो ट्रेड बैलेंस के सिलसिले में हमने ये कहा कि हमारे पास एक जो है S माइनस आई यानी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस जो है दैट इज रिफ्लेक्टिंग द इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज। अगर हमारी सेविंग्स जो हैं दे आर ग्रेटर देन द इन्वेस्टमेंट्स विच मीन्स S माइनस आई इज पॉजिटिव, देन वी एक्सपेक्ट कि हमारे मुल्क से कैपिटल जो है आउटफ्लो करेगा। दूसरी तरफ अगर हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट ज्यादा है जबकि सेविंग्स कम है, तो इट मीन्स कि S माइनस आई इज नेगेटिव, विच मीन्स के हमारे मुल्क में फॉरेनर्स जो हैं दे विल ब्रिंग देयर इन्वेस्टमेंट्स विच रिप्रेजेंट्स कैपिटल इनफ्लो। और हमने ये कहा कि हमारा S माइनस आई जो है दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द रियल एक्सचेंज रेट एंड द नॉमिनल एक्सचेंज रेट्स। एंड देन वी लुक्ड एट द NX curve and we said कि our NX curve which is the net exports curve that is downward sloping, और उस डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व का जहां पे इंटरेक्शन होता है दैट बेसिकली गिव्स अस द रियल एक्सचेंज रेट। लेकिन जब हम बात करते हैं पॉलिसी इम्पैक्ट की, तो हम उसको 2 डिफरेंट पैराए में देखना चाह रहे थे, और एक जो फर्स्ट सिनेरियो था उसमें जो है फिस्कल पॉलिसी मेजर्स का हमने इफेक्ट देखा था ट्रेड डेफिसिट्स के ऊपर। उस सिलसिले में हमने ये कहा कि सबसे पहले फिस्कल पॉलिसी एट होम कि अगर गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है या टैक्सेस को कम कर देती है, दोनों ही सूरतों में हमारे पास जो नेट रिजल्ट आता है वो क्या होता है। एक बात यहाँ पे ये है कि वी आर डिस्कसिंग अ स्मॉल ओपन इकोनॉमी। स्मॉल ओपन इकोनॉमी में अंडरलाइंग अजम्पशन ये थी कि इकोनॉमी का साइज इतना छोटा है कि इट कैन नॉट अफेक्ट द रियल वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट्स। इसलिए जो वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट है दैट इज गिवन फॉर दिस पर्टिकुलर इकोनॉमी, और उस गिवन इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो है हमने देखना है कि कितना ट्रेड डेफिसिट या कितना ट्रेड सरप्लस जो है वो पैदा होता है बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी मेजर्स। तो अगर हम शुरू करते हुए देखना चाह रहे थे कि अगर हमारी फिस्कल पॉलिसी एट होम जिसमें एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है या टैक्स रेवेन्यू कम हो जाती है, दोनों ही सूरतों में हमारे पास अगर बजट डेफिसिट हो, तो हमने ये देखा था कि रिजल्टेंटली
हमारे पास ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ जाता है अगर ऑलरेडी ट्रेड डेफिसिट था, और अगर ट्रेड सरप्लस है तो वो कुछ मजीद कम हो जाएगा। दूसरी तरफ जब हमने कहा कि फिजिकल पॉलिसी अब्रॉड, जिसमें हमने ये कहा कि वी आर अ स्मॉल ओपन इकोनॉमी, और अगर एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी फॉलो करती है कोई और ट्रेडिंग नेशन विच इज अ लार्ज इकोनॉमी, और वो लार्ज इकोनॉमी इज सफिशिएंटली लार्ज कि इट कैन इन्फ्लुएंस द रियल वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट, तो इस सूरत हाल में भी हमारे पास जो है ट्रेड डेफिसिट एंड सरप्लसेस जो है उनकी पॉसिबिलिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। फिर उसके बाद हमने देखना चाहा कि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट कर जाए, तो उस सूरत हाल में हमारे पास जो है वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट जो है दे आर गिवन, तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द ट्रेड डेफिसिट और द एनएक्स। इसके बाद हमने बात की कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट एंड द रियल एक्सचेंज रेट। नॉमिनल एक्सचेंज रेट को हमने डिफाइन किया कि वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी, जबकि रियल एक्सचेंज रेट में हमने ये कहा कि बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वन कंट्री इन टर्म्स ऑफ द सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अनदर कंट्री। यानी रियल एक्सचेंज रेट में हम रिलेशनशिप देख रहे हैं बिटवीन द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ टू डिफरेंट कंट्रीज, जबकि नॉमिनल एक्सचेंज रेट में हम जो है करेंसी वैल्यूज ही की बात करते हैं। एंड वी सेड कि अगर हम इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व जो है उसको शिफ्ट करें, उसके साथ फिजिकल पॉलिसी एट होम उसको कंसीडर करें, फिजिकल पॉलिसी अब्रॉड उसको कंसीडर करें, एंड फाइनली ट्रेड रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी यानी कि कमर्शियल पॉलिसी की इफेक्ट को भी डिस्कस करें, तो इन सारी चेंजेस के साथ हमारे रियल एक्सचेंज रेट पे क्या फर्क पड़ता है। और इसके साथ साथ जब हमारे रियल एक्सचेंज रेट पे फर्क पड़ता है तो डेफिनेटली करस्पॉन्डिंगली एक चेंज हमारी जो है वो ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस पे भी आती है। तो हमने ये कहा कि अगर हम देखना चाहें कि इम्पैक्ट ऑफ द फिजिकल पॉलिसी एट होम, कि अगर हमारा जी बढ़ जाता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या हमारी टैक्सेस जो हैं वो कम हो जाते हैं, तो दोनों ही सूरतों में क्या होता है कि हमारे पास सेविंग्स जो हैं वो कम हो जाती हैं। सेविंग्स का कम होना जो है वाई दैट इज टेकिंग प्लेस, क्योंकि हमने कहा कि हमारी टोटल नेशनल सेविंग जो है इसके दो कंपोनेंट हैं, एक है हमारे पास पब्लिक सेविंग और दूसरी है हमारे पास प्राइवेट सेविंग। जब जी बढ़ जाती है तो हमारी पब्लिक सेविंग कम होती है, जिसकी वजह से हमारी नेशनल सेविंग कम हो जाती है, और नेशनल सेविंग के कम हो जाने की वजह से हमारे पास एस माइनस आई वो जो है वो कम हो जाता है। अब इस सिनेरियो में मैं आपको रिमाइंड करती चली जाऊं कि एस माइनस आई पहले हमने कहा था इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज का कर्व, लेकिन यहां पे जब हम एक्सचेंज रेट की बात कर रहे हैं तो हमने ये कहा कि एस माइनस आई जो है दैट इज द सप्लाई ऑफ डॉलर्स कर्व, और दूसरी तरफ नेट एक्सपोर्ट्स जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है एक्सचेंज रेट के साथ, रियल एक्सचेंज रेट के साथ नेगेटिवली रिलेटेड है, दैट रिफ्लेक्ट्स द डिमांड फॉर डॉलर्स। तो इसलिए जब हमारी एस कम हो जाती है, नेशनल सेविंग कम हो जाती है, तो हमारा सप्लाई जो है वो भी कम हो जाता है, यानी एस माइनस आई कम हो जाता है। एज अ रिजल्ट हमारे पास एक्सचेंज रेट जो है रियल एक्सचेंज रेट वो बढ़ जाता है, एज्यूमिंग कि हमारा नेट एक्सपोर्ट कर्व जो है एंड नेक्स्ट कर्व जो है दैट इज द डिमांड फॉर डॉलर्स कर्व। देन वी सेड कि फिजिकल पॉलिसी अब्रॉड, और फिजिकल पॉलिसी अगर किसी बड़े मुल्क की चेंज इन जी है, एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी है, तो इस सूरत हाल में वो चेंज जो है दैट विल बी अफेक्टिंग द रियल एक्सचेंज रेट, एंड अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट जो है हमारे मुल्क की इन्वेस्टमेंट जो है उसमें इन्फ्लुएंस होगा, बिकॉज हमारे मुल्क की इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज डिपेंडेंट ऑन अ गिवन एक्सोजेनस रियल एक्सचेंज रेट ऑफ द वर्ल्ड, जिसको हमने कहा था आर स्टार। तो अगर आर स्टार हमारा जो बढ़ जाता है तो उसकी वजह से आई कम हो जाएगी, और आई के कम हो जाने से अगेन हमारा सप्लाई ऑफ डॉलर कर्व जो है वो शिफ्ट कर जाएगा, और अल्टीमेटली उसका जो है एक्सचेंज रेट के ऊपर इन्फ्लुएंस जो है वो जाहिर होगा। देन थर्ड चेंज जो हमने कंसीडर की थी दैट वाज फॉर द इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व, कि अगर हमारा इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाता है
تو اس کی وجہ سے بھی ہمارا ریئل ایکسچینج ریٹ افیکٹ ہوتا ہے اینڈ الٹیمیٹلی ہمارا نیٹ ایکسپورٹ جو ہے اس کا بیلنس بھی افیکٹ ہوتا ہے. فائنلی ہم نے ایک ایڈڈ ڈائمینشن جو ہے وہ دی اس کو, اور ہم نے بات کرنی چاہیے کہ اگر ہماری ٹریڈ پالیسی جو ہے اس میں کوئی چینج آتی ہے, اور اس کے لیے ایز این ایگزامپل ہم نے لیا تھا کہ اگر کوئی گورنمنٹ جو ہے ٹیرف یا کوٹاز امپورٹ کرتی ہے, امپوز کرتی ہے. ٹیرف کے امپوز کرنے کا یا کوٹا فکس کرنے کا مقصد ہوتا ہے ٹو ڈسکریج دی امپورٹس. تو جب ہماری امپورٹس جو ہیں وہ ڈسکریج ہوتی ہیں یعنی کہ کم ہو جاتی ہیں, تو اس صورتحال میں کیا سچویشن ہوتی ہے کہ ہمارا این ایکس کرو جو ہے وہ شفٹ کر جاتا ہے, یعنی نیٹ ایکسپورٹس کا جو بیلنس ہے وہ کم ہو جائے گا, اور اس کی وجہ سے ہمارا ریئل ایکسچینج ریٹ بھی کم ہو جائے گا. ریئل ایکسچینج ریٹ کے کم ہو جانے کی وجہ سے ہمارے پاس ایک اور سینیریو بھی ڈیولپ ہوتا ہے, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری ایکسپورٹس جو ہیں ان کو بڑھنا چاہیے, کیونکہ وی آر سیئنگ کہ ہمارا کرنسی جو ہے گڈز اینڈ سروسز جو ہیں وہ زیادہ پرچیز کرنے کے قابل ہے, یا ہماری گڈز اینڈ سروسز جو ہیں ان ادر ورڈز ریئل ٹرمز میں یو ایس کی گڈز اینڈ سروسز جو ہیں وہ ریلیٹیولی ان ایکسپینسو ہو جاتی ہیں, اور جس کے ریزلٹ میں یو ایس کی ایکسپورٹس بڑھ جاتی ہیں. تو ایک طرف ہمارے پاس فینومینا ہے کہ ہماری امپورٹس جو ہیں وہ کم ہو گئی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریئل ایکسچینج ریٹ کے کم ہو جانے کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹس بڑھ گئیں. اوور آل جو نیٹ چینج ہم نے دیکھی وہ یہ تھی کہ ہماری نیٹ ایکسپورٹس جو ہیں دے ریمینڈ ان افیکٹڈ, اور یہ اس صورتحال میں تھا جب ہمارے پاس سپلائی آف ڈالر یعنی کہ ایس مائنس آئی دیٹ واز کانسٹنٹ اینڈ دی ورٹیکل لائن. اور لاسٹلی ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی نامینل ایکسچینج ریٹ کی, اور نامینل ایکسچینج ریٹ کو ہم نے ڈیرائیو کیا تھا فرام دی اکویشن آف دی ریئل ایکسچینج ریٹ. ریئل ایکسچینج ریٹ کو ہم نے ڈینوٹ کیا تھا ایپسلون کے ساتھ, اور ہم نے کہا ایپسلون از اکول ٹو ای ٹائمس پی اوور پی اسٹار. ای از دی نامینل ایکسچینج ریٹ, پی از دی ڈومیسٹک پرائسز اینڈ ڈیوائڈیڈ بائی پی اسٹار وچ از دی ورلڈ پرائس اور دی ٹریڈنگ کنٹریز پرائسز اور دی فارن پرائسز. اگر ہم اسی کو یوز کریں اکویشن کو ای یا نامینل ایکسچینج ریٹ کے ڈٹرمنیشن میں, تو وی ول سے کہ ای از اکول ٹو ایپسلون وچ از دی ریئل ایکسچینج ریٹ ملٹیپلائڈ بائی پی اسٹار اوور پی. اور پھر ہم نے کہا کہ ہم اس کو مزید الیبوریٹ کرنے کے لیے اور اس کے ڈٹرمیننٹ کو دیکھنے کے لیے وی کین رائٹ دس اکویشن ان ٹرمز آف پرسنٹیجز, اینڈ الٹیمیٹلی جو ریزلٹ ہمارے پاس آیا وہ ہم نے یہ کہا کہ ہمارے پاس نامینل ایکسچینج ریٹ جو ہے دیٹ از ڈیپینڈنٹ آن دی ریئل ایکسچینج ریٹ اینڈ دی ڈفرینشیل بٹوین دی فارن انفلیشن ریٹ مائنس دی ہوم انفلیشن ریٹ. اور ہم نے یہ کہا کہ اگر فارن انفلیشن ریٹ بڑھ جائے گا تو ہماری کرنسی کا نامینل ایکسچینج ریٹ اپریشیٹ ہو جائے گا, لیکن اگر ہمارے کنٹری کی انفلیشن بڑھ جائے گی تو پھر ہمارے کنٹری کی کرنسی جو ہے وہ ویک ہو جائے گی, یعنی ہمارا نامینل ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گا. اور ریلیشن شپ بٹوین دی ریئل ایکسچینج ریٹ اینڈ دی نامینل ایکسچینج ریٹ واز ڈائریکٹ, کہ اگر ریئل ایکسچینج ریٹ ہمارا بڑھ جاتا ہے تو نامینل ول فالو, assuming کہ ہمارے انفلیشن ڈفرینشیل کو کوئی فرق نہیں پڑا. تو یہ ہے اوور ویو آف دی پریویس لیکچر. آج ہم اسی اوپن اکانومی کے سلسلے میں جو لاسٹ ٹاپک ہے دی پرچیزنگ پاور پیرٹی اس کو ڈسکس کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے ایک اور امپورٹنٹ اکنامک ایشو وچ از آف دی ان امپلائمنٹ اس کے بارے میں ڈسکشن شروع کریں گے. تو آج ہم شروع کرتے ہیں اپنے پہلے ٹاپک کے ساتھ وچ از دی پرچیزنگ پاور پیرٹی اور پی پی پی. یہ جو ہے پرچیزنگ پاور پیرٹی اس کو ہم لا آف ون پرائسز کی شکل بھی دیتے ہیں, لیکن یہ پرچیزنگ پاور پیرٹی آفٹر ڈسکشن ول فائنڈ آؤٹ اینڈ کامنلی اٹ از بلیوڈ کہ دس از این ایکولیبریم تھیوری, کہ اگر اسٹیڈی اسٹیٹ میں ہو اکانومیز یعنی وہ ایکولیبریم میں ہو. ایکولیبریم جو ہے اس کو ہم ڈیفائن اس طرح کرتے ہیں it is a situation, a scenario where there is no tendency for further change. تو سب سے پہلے ہم پرچیزنگ پاور پیرٹی کو ڈیفائن کرنا چاہیں گے,
اور ہم یہ کہتے ہیں کہ پرچیزنگ پاور پیرٹی میں دی فرسٹ ڈیفینیشن از کہ دی پرائسز آف گڈز اینڈ سروسز، یعنی کہ باسکٹ آف گڈز اینڈ سروسز شوڈ بی پرائسڈ سیم اکراس ڈفرنٹ کنٹریز. لیکن وہ سیم جو ہے دیٹ شوڈ بی ایڈجسٹڈ ود دی کرنسی ویلیوز. اٹ از اے ڈاکٹرائن دیٹ اسٹیٹس دیٹ گڈس مسٹ سیل ایٹ دی سیم کرنسی ایڈجسٹڈ پرائس ان آل کنٹریز. یعنی کہ ہر ملک میں کرنسی کی ایڈجسٹمنٹ کے علاوہ پرائسز آف دی گڈز اینڈ سروسز ان دی سیم باسکٹ شوڈ ریمین دی سیم. اینڈ دین وی آلسو ڈیفائن دی پرچیزنگ پاور پیرٹی ان اے ڈفرنٹ پرسپیکٹو، جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نامینل ایکسچینج ریٹ جو ہے اس کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے سو دیٹ دی پرائسز آف دی گڈز اینڈ سروسز ان اے پرٹیکولر باسکٹ دے شوڈ بی ایکول اکراس کنٹریز. اور یہ کس طرح ایکول ہو سکتا ہے؟ بیہائنڈ دی سین جو ہے وی ٹاک اباؤٹ دی آربیٹراج ایکٹیویٹی اینڈ دی لا آف ون پرائسز. اب آربیٹراج ایکٹیویٹی جو ہے اس کا کیا ریشنل ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اگر گڈز اینڈ سروسز کسی ایک ملک میں ریلیٹیولی چیپ ہوں گی تو پروفٹ سیکر انڈیویجولس اراؤنڈ دی گلوب وہ وہاں سے پرچیز کر کے دین دے ول ٹرائی ٹو سیل دیٹ باسکٹ آف گڈز اینڈ سروسز in another country where they were expensive. And then the groups of the arbitrage, they will follow the same kind of activities, that buying where they are cheap and then selling where they are expensive. Ultimately situation کیا ہوگی کہ جہاں پہ basket of goods and services was cheap وہاں پہ اس کی ڈیمانڈ بڑھتی چلی جا رہی ہے. ڈیمانڈ کے بڑھ جانے کی وجہ سے as is true for any market situation ہماری پرائس جو ہے وہ بڑھ جائے گی for that particular basket of goods and services. دوسری طرف یہ آربیٹراجر جہاں پہ ان گڈز اینڈ سروسز کو بیچ رہے تھے ان کنٹریز میں کیا ہوگا کہ دے آر انکریزنگ دی سپلائی آف دیٹ پرٹیکولر باسکٹ آف گڈز اینڈ سروسز. اور سپلائی کے بڑھ جانے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ وہاں پہ پرائس جو ہے وہ کم ہو جائے گی. اوور آل ٹینڈینسی کیا ہے کہ جہاں سے وہ بائی کر رہے تھے بیکاز اٹ واز چیپ وہاں پہ دیر از اے پریشر فار دی پرائسز ٹو گو اپ بیکاز آف دس آربیٹراج ایکٹیویٹی. اور دوسری طرف جہاں سے وہ آ کے سیل کر رہے تھے جس مارکیٹ میں وہاں پہ سپلائی زیادہ ہونے کی وجہ سے دیر ول بی اے ٹینڈنسی فار دی پرائسز ٹو گو ڈاؤن. الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ لا آف ون پرائسز سیز دین ون پرائس ول پریویل ایٹ بوتھ دی پلیسز اینڈ ایز اے ریزلٹ وی سے کہ پرچیزنگ پاور پیرٹی ول ہولڈ ٹرو اینڈ ول ہیو دی سیم price across the globe. اب اسی concept of the purchasing power parity کو اگر ہم نے define کرنا ہو so let's look at the slide here. So what we say here is that the nominal exchange rate into the prices at home they should be equal to the foreign prices. When we take the nominal exchange rate and we multiply it by the domestic prices it basically gives us the cost of a basket of domestic goods in foreign currency. Then when we look at the P star which is the other side of the equation then the cost of a basket of foreign goods in foreign currency. We are talking about the same good and once we are looking at the basket of goods and services domestically produced but the prices in foreign currency and then we are looking at the same good but the prices in the foreign currency and we are saying these two prices they should be equal to each other. And then what is the role of the domestic prices here? So we'll look back on this slide. The cost of a basket of domestic goods in domestic currency is the domestic price. So on the left hand side of the equation if we take E into P that is the cost of a basket of domestic goods in foreign currency. And if we simply look at the capital letter P, then that is cost of a basket of domestic goods in domestic currency. Now from here, if we want to solve for the nominal exchange rate E, then E is equal to the P star over P. And our purchasing power parity theory implies that the nominal exchange rate between the two countries equals the ratio of the country's price level. And that is the essence of our purchasing power parity کہ اگر ہم نامینل ایکسچینج ریٹ کو دیکھتے ہیں تو دیٹ سمپلی از دی ریشیو آف دی پرائسز بٹوین دی ٹو کنٹریز. اور ٹو بگن وتھ جب ہم نے ایکویشن کو شروع کیا تھا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ڈومیسٹک
लोकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज की बास्केट और उसकी प्राइस इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू के वही गुड्स एंड सर्विसेज की बास्केट फॉरेन कंट्री में पैदा हुई और दैट इज रिफ्लेक्टेड इन दी फॉरेन करेंसी। और इससे जो हमने रिजल्ट डिराइव किया वो ये है कि हमारा नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो है वो एडजस्ट करेगा एंड दैट विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्राइसेस बिटवीन द टू कंट्रीज। अब इसको अगर हम फर्दर आगे लेके चलें तो देन if we have this nominal exchange rate E which is equal to P star over P, which is the foreign price of the same goods of basket divided by the domestic price for the same goods of basket, then our real exchange rate epsilon. Epsilon की definition हमारे पास ये है कि epsilon is equal to the nominal exchange rate into P over P star. And now if we replace our nominal exchange rate with the ratio which is P star over P जो हमने purchasing power parity से निकाली है, तो then our real exchange rate will be equal to P star over P into P over P star and that is equal to 1. What it means here is कि अगर हमारे पास purchasing power parity जो है, if that holds true, then हमारा nominal exchange rate E जो है, that is equal to the ratio of the foreign prices P star over the domestic prices P. और अगर इसी assumption को हम use करें for the calculation of epsilon or the real exchange rate, तो उस सूरत हाल में हमारे पास क्या आता है P star over P into P over P star which is equal to 1. तो इस particular scenario में what will happen to the net exports? As we see on this graph here, our net exports curve is horizontal and our real exchange rate is equal to 1. And we also said that we are looking at the foreign currency market. The supply of a currency is S minus I, whereas the demand for the currency is NX, which is the net exports. तो अगर हमारी purchasing power parity जो है, if that holds true, then what happens कि our NX or the net export curve जो है that is horizontal and at that level our real exchange rate is equal to 1. So under the purchasing power parity, changes in S minus I, they have no impact on the epsilon or E, which means कि any change in the savings or the investments, they will not be able to influence the nominal exchange rates or the real exchange rates. और इस सूरत हाल में हमारा रियल एक्सचेंज रेट जो है दैट विल बी इक्वल टू 1 and one price will hold across the globe. All the trading nations, they will be selling the same basket of goods and services at the same price adjusted for the currency value changes. Now the question arises that does this purchasing power parity holds true in the real life? So the answer of course is, if you look around and try to look at this, do we have the same price for the same basket of goods and services across the globe? So the answer is no. Then we need to look at the reasons behind it. What are the reasons कि क्यों ये prices जो हैं वो एक दूसरे के बराबर नहीं होती? One reason is कि हमारी कुछ goods जो हैं वो non-tradables होती हैं. Perishable items, for example, they cannot be traded that easily. There are certain factors of production which are fixed, for example, the mining, the natural reserves. They cannot be directly shifted in their original form. So there are certain goods and services which are non-tradable, therefore they remain in the custody of one particular country. दूसरा जो reason है कि why purchasing power parity does not hold true, that is of the transportation cost. Okay, if we look around the globe, for example, if we look at the transportation cost of shipping any product or service from Pakistan to North America, so the transportation cost is very high because of the distance. So transportation cost की वजह से the ultimate price in a distant located country जो है वो ज़्यादा हो जाती है. There is another scenario as well, and that scenario is that the goods of different countries, they are not perfect substitute, because
different countries, they are endowed with different natural resources. The countries where labor is abundant, they use the labor abundant technology of production, and the countries where the capital and the technology is in advanced stage, they use the capital intensive technology of production, and there is always a possibility that the same product produced in a labor intensive country and the same product produced in a technological advanced country جو ہے they will be different and they will not be perfect substitute. Let's look at this last thing. Nonetheless, the purchasing power parity is a useful theory. Why? Because it's very simple and intuitive. If it is not applicable in the real life, but it does give us some insight in the real world and saying that the nominal exchange rates have a tendency towards their purchasing power parity values over the long run. جیسے کہ میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ ہماری یہ purchasing power parity کی جو تھیوری ہے, it is an equilibrium theory, steady state situation, جس میں جو ہم یہ کہتے ہیں کہ that steady state is achieved in the long run, it's not a short run phenomena. جبکہ ایکسچینج ریٹ جو ہیں ان میں fluctuation جو ہیں they occur on daily, weekly and sometimes on hourly basis as well. But purchasing power parity کی intuitive appeal جو ہے that tells us کہ what the steady state will look like. یعنی کہ لانگ رن میں کیا ہوگا, there is a possibility کہ prices جو ہیں they will move towards equality across the globe. تو یہ تو تھا ہمارا purchasing power parity, the last topic when we are closing our open economy topic. اب ہم موو کرتے ہیں اپنی ایک اور میکرو اکنامک ایشو کی طرف جو کہ از ون آف دی میجر ایشوز, اور وہ ایشو جو ہے ہماری ڈیلی لائفس کو آلموسٹ آل آف اس جو ہے دے فیس دیٹ pinch of that particular macroeconomic issue, and that issue is of the unemployment. So starting with these issues, first of all ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ what are the causes of unemployment, and then we will try to see behind the scene کہ how we can improve our unemployment situation and what policy measures can be taken to improve the unemployment of a particular country. تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں with a kind of unemployment جس کو ہم کہتے ہیں natural rate of unemployment. As the word indicates, natural. This is something which cannot be avoided by the mankind. And this is the unemployment rate which prevails in an economy all the time even when the economy is in a steady state equilibrium. اب یہ نیچرل ریٹ آف انمپلائمنٹ بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ اٹس اے کامن ٹینڈنسی فار اس دیٹ وی آلویز لک فار دی بیٹر اپرچونٹی. What happens is that during the time period when we are switching our jobs, that also gives us what is known as the unemployment period, and we will be considered unemployed during that particular period of time, and that will constitute our natural rate of unemployment. When we look at the economic conditions here, that in recession کیا سینیریو ہے جس میں ہماری اکانومی جو ہے اس کی اکنامک گروتھ جو ہے وہ سلو ہوتی ہے. سو ڈیورنگ دیٹ پیریڈ دی نیچرل ریٹ آف انمپلائمنٹ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن جب ہماری اکانومی جو ہے وہ بوم پہ ہو, یعنی اکنامک گروتھ اینڈ اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے از ایٹ اے ہائر لیول, تو اس سینیریو میں ہمارا نیچرل ریٹ آف انمپلائمنٹ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اب اسی انمپلائمنٹ کو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے لیٹس لک ایٹ دی نیچرل ریٹ آف انمپلائمنٹ ان پاکستان. تو انمپلائمنٹ ریٹ آف پاکستان میں وی ہیو ٹیکن دی ایئرز آن دی ایکس ایکسس اینڈ دی unemployment rate in terms of percentages on the y-axis. Over this period of time, we have more or less an increasing trend in the unemployment rate, starting from 3.5% to, in the year 2003, a level of 7.5%. So, looking at the economy of Pakistan and the unemployment rate figure, okay, so it is giving us a continuous upward trend, which needs a careful deliberations.
Now, parallel to this, let's look at a developed country, which is US, and try to see the unemployment rates in that particular country. So, इस ग्राफ के ऊपर हमने unemployment rate and the natural rate of unemployment जो है वो दोनों ही ड्रा किए हैं for US economy. It is for the period of 1958 to 2002. The unemployment rate is fluctuating up and down. The highest unemployment rate touched a level of approximately 11% of the total labor force, and the lowest is a level of 3.4% approximately. But in comparison to the unemployment rate of Pakistan, which has approximately an upward trend, the US economy is having the unemployment rates with the fluctuations, ups and downs, which is reflecting the business cycle. And when we look at the natural rate of unemployment, so the natural rate of unemployment is a smooth curve going up with the recession in the economy, and then finally when there is boom, then the natural rate of unemployment is falling down. So in order to further deliberate on the unemployment issue, we need to define a model first. और उस मॉडल में हम सबसे पहले देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, एंड देन विल सी कि व्हाट आर द पॉलिसी implications. So for that, let's look at this particular slide for certain definitions here. Now on this slide we have used certain notations. We are saying L, capital letter L, we will use to describe the number of workers in the labor force. Then capital letter E is number of employed worker. Then capital letter U, number of unemployed workers, and then the U as a ratio to L is the unemployment rate. आपको हमेशा ज़हन में रखना चाहिए कि जब भी हम unemployment की बात करते हैं तो we define it as a percentage of the total labor force. पिछले चंद एक लेक्चर्स में जब हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे तो उसमें हमने लेबर फोर्स को भी डिफाइन किया था. लेबर फोर्स में हमने ये कहा था कि पीपल हु आर इन द एज ऑफ 18 and 60 इन जनरल दे कॉन्स्टिट्यूट द लेबर फोर्स, और उस लेबर फोर्स में जितने अनएम्प्लॉयड वर्कर्स होंगे दे आर द अनएम्प्लॉयड वर्कर्स. सो U to the ratio L, that is the unemployment percentage as a ratio to the total labor force. तो इसी को मॉडल को फर्दर कंटिन्यू करते हुए we have to take certain assumptions. इनमें सबसे पहली assumption जो है इस स्लाइड पे we are saying कि L is exogenously fixed. What it means? कि हमारी जो total labor force का size है that is determined outside this particular model. कि कौन जो है वो लेबर फोर्स का पार्ट है और कौन जो है वो लेबर फोर्स का पार्ट नहीं है, that is determined outside this simple model of ours. Then we are saying the second assumption, during any given month, if we use lowercase letter s as a fraction of employed workers that become separated from their jobs, and then lowercase letter f, the fraction of unemployed workers that find jobs. अब हमारे इस मॉडल के अंदर सबसे पहली assumption हमने कहा है कि लेबर फोर्स जो है उसका साइज इज exogenously fixed, determined. Then we are saying within a particular month हमारा lowercase letter s जो है that is the fraction of the labor force who are searching for the job, and lowercase letter f, the fraction of the labor force who have found the job. And then finally, your S can be taken as the rate of job separations and your F is the rate of job finding. And then again, that S and F, we have assumed that they are exogenously fixed. अब मज़ीद इससे आगे बढ़ने के से पहले we would like to look at this particular slide here. और ये slide जो है that is telling us the transition between employment and unemployment. So we have taken here two sectors. One is the sector of the employed people and the other is the sector for the unemployed people. As into the employed workers,
they move from implied sector to the unimplied sector, whereas F, which is the people who are finding the job, into the U, unimplied, they move from unimplied to the implied segment. यानी कि एक वर्कर जो है वो अनइम्प्लाइड सेक्टर से इम्प्लाइड सेक्टर में जब जाता है तो बेसिकली हाउ डू वी डिटरमिन दैट इज कि फ्रैक्शन ऑफ द पीपल हु हैव फाउंड जॉब, एफ इनटू यू इज अ मूवमेंट फ्रॉम अनइम्प्लाइड टू द इम्प्लाइड. दूसरी तरफ इम्प्लाइड से अनइम्प्लाइड में जो जाते हैं देन वी हैव द फ्रैक्शन ऑफ पीपल हु हैव सेपरेटेड फ्रॉम द जॉब एस इनटू द कैपिटल लेटर ई हु वर प्रीवियसली इम्प्लाइड. So they move from the implied to the unimplied. अब हम बात करना चाहेंगे steady state condition, यानी जिसमें steady state में हम ये कह रहे हैं कि लोग जो हैं वो जॉब चेंज के प्रोसेस से गुजर चुके हैं and everything is at rest. How do we define the steady state condition is that the labor market is in steady state or long run equilibrium if the unemployment rate is constant. We can also write this steady state condition as S into E, number of employed people who lose or leave their jobs, is equal to F into U, number of unemployed people who find jobs. यानी कि हमारी steady state वो condition होगी जिसमें हमारा unemployment rate जो है वो constant होगा. और वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है हमारा किस वक्त कांस्टेंट हो सकता है, वो उसी वक्त कि जो लोग जिन्होंने वॉलंटरली जॉब सर्च के लिए जॉब छोड़ दी है या दे हैव बीन फायर्ड फ्रॉम द जॉब्स, यानी अब जिनके पास जॉब नहीं है वो नंबर ऑफ पीपल दे आर एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ पीपल हु हैव फाउंड द जॉब. यानी जब हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं हम बात करते हैं सेपरेशन from the workforce, which is S into the E. It has two components. उसको हम कहते हैं voluntary unemployment and then is involuntary unemployment. जो voluntary unemployment होती है that relates to the job search when we are switching our jobs, and in between that time period if we are out of job we will be classified as unemployed. लेकिन जो इनवॉलंटरी होती है उसमें ये होता है कि जब आपको फायर कर दिया गया हो बिकॉज ऑफ द स्क्वीज इन द जॉब मार्केट सिचुएशन, शटिंग डाउन ऑफ एनी बिजनेस और फॉर एनी रीजन, जबकि आपको जॉब से सेपरेट कर दिया गया, दैट इज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. तो इसी स्टेडी स्टेट में हमारे पास whether we are talking about the voluntary unemployment or the involuntary unemployment, हमारे पास total number of individual who are unemployed they will be equal to the number of individual who have found the job. So that is our steady state long run equilibrium, जबकि हमारा unemployment rate जो है वो constant रहेगा. So let's look at this slide here. Now solving for the equilibrium unemployment rate, we said in the steady state we have F into U is equal to S into E, यानी कि number of individual जो के separate out हो गए from the job that will be equal to the number of individuals जिनको job जो है वो मिल चुकी है. So F into U can also be written as S into L minus U, क्योंकि आपको याद होगा कि हमने ये कहा कि हमारी total labor force L जो है उसके दो कंपोनेंट हैं. टोटल लेबर फोर्स में या लोग अनएम्प्लॉयड होंगे यानी कि U या वो एम्प्लॉयड होंगे E. सो वी कैन से आवर टोटल लेबर फोर्स L इज इक्वल टू U प्लस E. So if we use the definition of this labor force right in here, so we can replace our letter E here with L minus U. So we have S multiplied by L minus U, and if we just multiply S by both L and U, we get S into L minus S into U. Now what is our objective? The objective is to calculate the rate of unemployment, equilibrium rate of unemployment. So we are trying to solve for U over L, unemployment rate.
So we can write it down as F plus S into U is equal to S into L. And finally, what we get out of this is कि U over L is equal to S over S plus F. यानी हमारे पास स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम से हमने स्टार्ट किया और उस इक्विलिब्रियम में हमने कहा कि हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कांस्टेंट रहेगा. उसको हम फिगर आउट करना चाह रहे थे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट विच इज U टू द रेशियो ऑफ L, यानी कि U डिवाइडेड बाय L. एंड फाइनली वी हैव कम अप with the definition of U over L in the steady state condition. We said this is equal to S divided by S plus F. Now let's take an example to elaborate this steady state equilibrium condition. और उसमें हम इस example पे we have taken certain data, we have assumed the data, and we are saying suppose each month 1% of the employed workers lose their jobs, which means as the people who have been separated from the job, they are 1% of the labor force, employed people. So we have S is equal to 0.01. Then second piece of information is that each month 19% of the unemployed workers find jobs. So our F is equal to 0.19. Now if we want to find the natural rate of unemployment, then how can we calculate it? We have it as U divided by L is equal to S over S plus F. So that is, as per our data, equal to 0.01 divided by 0.01 plus 0.19, that is 0.01 divided by 0.2, and that gives us 0.05 or 5%. इस एग्जाम्पल में हम ये कह रहे हैं कि अगर 1% लोग जो हैं they are separated from their job and 19% लोग जो हैं उनको अगर जॉब मिल जाए तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हमारा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल बी 5%. नाउ लेट्स लुक एट दी पॉलिसी इम्प्लीकेशंस. इसमें हमने ये कहा कि हमारा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है U ओवर L, उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक है S और दूसरा है F. S इज द फ्रैक्शन ऑफ पीपल हु हैव बीन सेपरेटेड फ्रॉम द जॉब एंड F इज फ्रैक्शन ऑफ पीपल हु आर एबल टू फाइंड द जॉब्स. पॉलिसी मेकर जो है इससे जो है they can get certain guideline in order to frame their policies which will be aimed to reduce the unemployment. पॉलिसी मेकर्स जो है अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने की अगर कोशिश करते हैं तो व्हाट शुड दे डू, कि वो या तो एस को कम कर दें, नंबर ऑफ इंडिविजुअल हु हैव बीन सेपरेटेड फ्रॉम द जॉब, या दूसरा ये है they should try to help out the individual to find the job, यानी कि F को जो है वो बढ़ा दें. Now the next question is why there is unemployment. अगर जो है लोग instantaneously job find कर लें, यानी कि इधर जो है उन्होंने जॉब छोड़ी and they are able to get the job immediately, जिसका मतलब ये है कि our F is equal to 1, तो उस सूरत हाल में हमारे पास क्या सिचुएशन होगी? सिचुएशन ये होगी कि वी हैव ऑलरेडी सेड कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट U ओवर L इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाय S प्लस F. तो अगर हमारे पास द वैल्यू ऑफ F इज इक्वल टू 1, तो देन वट एवर द वैल्यू ऑफ S इज, आवर अनएम्प्लॉयमेंट रेट U ओवर L विल बी इक्वल टू और क्लोज टू 1, 0 will be close to 0. अब why there is unemployment? There are basically two reasons. The one reason is this job search, कि लोग जो हैं एक जॉब से जब दूसरी जॉब की तरफ स्विच करते हैं तो then they need to wait for some time and during that time they are considered unemployed. And दूसरी जो situation है और जो reason है that is the rigidities, wage rigidities. So basically unemployment जो है उसकी दो मेन रीजंस हैं. एक रीजन है हमारे पास जॉब सर्च की, कि पीपल दे वुड लाइक टू गो फॉर द बेटर एंड द बेटर जॉब, और वो बेटर जॉब के लिए जब एक जॉब को छोड़ते हैं एंड द टाइम पीरियड जिसमें अभी उनको बेटर जॉब नहीं मिली, दैट इज काउंटेड टुवर्ड्स द अनएम्प्लॉयड. दूसरी है हमारे पास वेज रिजिडिटीज.
तो let's discuss all of both of these in detail now. तो हम शुरू करते हैं अपने डिस्कशन फ्रॉम द जॉब सर्च एंड द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, कि जब लोग एक जॉब को छोड़ते हैं in order to have a better job. So during the time period in which they are unemployed, that kind of unemployment is known as the frictional unemployment. यानी कि friction है from moving from one place to another place, and इस time period में they are unemployed और जब तक जो है उनको जॉब नहीं मिल जाती they will be considered as unemployed, but that will be a shorter period of time. So how do we define the frictional unemployment? The frictional unemployment is caused when an individual is trying to go for a better job, and the time he or she spends without a job in order to find a better job is known as the frictional unemployment. Now, what are the reasons here? We have given the reasons for the unemployment here, and the first frictional unemployment, the reason is that individuals, they have different job preferences. Workers, they have different abilities and they have different preferences. What does it mean? कि जब आप एक जॉब को छोड़ते हैं and you're trying to find out another job, उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है to get a suitable job because your abilities, they may be different from what the job requirement is, and then you try to go for another job. And then your preferences can also be different from what is being offered to you. Then is the next here, jobs have different skills requirement. कि probably if you have a different kind of skill and you want to switch to another job, और वो जो नई जॉब है उसकी स्किल रिक्वायरमेंट जो है फ़र्क हो सकती हैं, इसीलिए इन बिटवीन दैट टाइम पीरियड जो है आपका जॉब सर्च पीरियड जो है वो बढ़ जाता है. नेक्स्ट इज ज्योग्राफिक मोबिलिटी ऑफ द वर्कर्स नॉट इंस्टेंटेनियसली. अगर आपको एक जगह से दूसरे ज्योग्राफिक लोकेशन में जॉब सर्च के लिए जाना पड़ता है तो इट इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट टू इमीडिएटली चेंज, लेट्स सपोज फ्रॉम मुल्तान टू कराची फॉर एग्जाम्पल. You need to think twice and thrice before making that particular move. And then flow of information about the vacancies and the job candidates is imperfect. That the information flow in the job market is not very perfect, is not very efficient. It is quite likely कि जो हमारे employer हैं उनको jobs के candidates के बारे में full information ना हो और जो candidates हैं उनको job के बारे में full information ना हो. तो these are some of the reasons जिसकी वजह से हमारा जो frictional unemployment है जिसको हम कहते हैं कि the time period during which people they are trying to find out a better job वो है बढ़ जाता है. तो इससे पहले कि हम आज का लेक्चर कंक्लूड करें, मैं ये चाहूँगी कि हम थोड़ा सा समराइज कर लें कि आज के लेक्चर में हमने क्या टॉपिक्स डिस्कस किए हैं. तो हमने शुरू किया था with the open economy, and the last topic there was that of the purchasing power parity. Purchasing power parity को law of one price भी कहते हैं. That basically is an equilibrium scenario जिसमें हम ये कहते हैं कि हमारे nominal exchange rates वो adjust करेंगे so that कि prices of a basket of goods and services in one country should be equal to the prices of the same goods and services in another country. And then we say कि okay, purchasing power parity in reality does not hold true in the short run, but it may hold true in the long run equilibrium condition. But it does provide a certain insight how and through what mechanism हमारे nominal exchange rate जो हैं वो adjust करते हैं. And then we started a new topic of another macroeconomic issue which is unemployment. Unemployment में we said कि there are different types of unemployments. एक हमने कहा कि natural rate of unemployment है जो कि during a certain period of time certain number of individuals जो हैं they remain unemployed. उसको हमने एक मॉडल की मदद से we tried to calculate the unemployment rate and we said कि U over L is equal to S divided by S plus F.
یعنی کہ نمبر آف انڈیویژلس اور دی فریکشن آف انڈیویژلس ہو ہیو بین سیپریٹڈ فرام دی جاب ڈیوائڈیڈ بائی دی fraction of the individual who have been separated from the job plus the fraction of individuals who have found the job. And then we also took an example to calculate the natural rate of unemployment, and we said کہ اگر ہمارے پاس in a particular month fraction of unemployed people جو ہیں who have been separated from the job, if that is equal to 1%, اور جن لوگوں کو جاب مل گئی fraction of individuals who found the job that is 19%, so we calculated the natural rate of unemployment as 5%. پھر اس کے بعد ہم نے بات کی frictional rate of unemployment کی، جس میں تھا کہ time period people are out of the job because they are trying to find a better job. Frictional unemployment میں there are certain reasons why the frictional unemployments are there, and then we talked about the people, they have different abilities and preferences. That is one reason. They take more time to get adjusted and find a new job. Then the employers, they also need different skill for different kinds of job. And then geographic mobility is not that easy, that people, they think twice and thrice when they have to make a big geographic movement in order to go for a better job. And then we also said کہ finally کہ ہماری جو جاب مارکیٹس ہیں ان میں فلو آف انفارمیشن جو ہے وہ بھی پرفیکٹ نہیں ہے، کہ امپلائر جو ہے ان کے پاس فل انفارمیشن نہیں ہوتی اباؤٹ دی انڈیویژلس ہو آر لوکنگ فار دی جاب، اینڈ دی انڈیویژلس دے مے ناٹ ہیو دی ایکسیس ٹو دی فل انفارمیشن اباؤٹ دی نیچر اینڈ دی ریکوائرمنٹ آف دی جاب. So these are some of the reasons why the frictional unemployment exists in a particular economy. تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اسی انمپلائمنٹ ہی کے ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے، اینڈ اسپیسیفکلی ہم فرکشنل انمپلائمنٹ کے سینیریو میں دیکھیں گے کہ پبلک پالیسی اینڈ دی جاب سرچ کیا ہے، اینڈ دین انمپلائمنٹ انشورنس کا کیا رول ہے ان دی ڈٹرمینیشن آف دی فرکشنل انمپلائمنٹ، اینڈ دی ویج ریجیڈیٹیز جو ہیں ان کی وجہ سے کیا سینیریو ڈیولپ ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ فائنلی ہم یہ بھی دیکھنا چاہیں گے کہ وٹ از دی رول آف دی یونین on the unemployment, and then also the role of the determination of the minimum wages. تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ڈاکٹر طالب سے ملاقات ہوگی. اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.